Shubhra ji, Abhishek, can we please settle down? Veenu, can we please close the gate? I request everyone to please take your seats. Thank you. अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है. The path have now lit up. Look, there's a woman coming. Good morning and a very warm welcome to everyone. Thank you for joining us today as we commemorate the International Women's Day. On a day when resilience and power get together to paint a beautiful picture, we come together to celebrate the phenomenal universe of womanhood. I am Anuradha, your host for the day. I'm privileged to walk with you through this special event, revering and honoring every woman around us on this significant day. आज कोई आम दिन नहीं है. यह शक्ति, समानता और प्रेरणा का उत्सव है. Today is no ordinary day. It is a celebration of strength, equality, and inspiration. We are here to celebrate women from all walks of life for the remarkable contributions they make to our world every day. Indomitable spirit of women who have broken the chains of stereotypes and have shaped our society, inspired bravely, and illuminated our lives. Let us kickstart this celebration. I request Ms. Susan Ferguson, country representative at UN Women India, to welcome the gathering. Thank you very much, Anuradha, and welcome everyone here today. I'm really never ceased to be moved by a whole room full of women. And I think that in India, there is such power in the collective, everywhere in the world, actually. But in India, there's always such an incredible demonstration of that. So it's wonderful to be here with you all today. So as Anuradha has already said, welcome to International Women's Day, which was last week, but we're still celebrating. And welcome to UN House, of course. And welcome to the launch of our new book also, which is When Women Lead. But I'd particularly like to welcome the women who've told their stories in this beautiful book. Thank you so much for talking to us and letting us know what you have been doing in your lives. I'd really like to also welcome the team, the all-women team who put the book together. So it was all women, photographers, writers, editors, everyone. So thank you to you also and welcome. Of course, our Ford Foundation partners, it's fantastic to have you here today. And a special welcome to Hilary Pennington, who is the Executive Vice President of Programs for Ford. And of course, Reshma, who is our neighbour and leads the Ford team here. So welcome to all of the Ford family here today. So thank you again, everyone, for coming. So this year's theme is Invest in Women, Accelerate Change. But, you know, why? What is this? What does this even mean?
So the reason is simple, that if we don't invest more in gender equality and women's empowerment, we won't reach the Sustainable Development Goals by 2030. So halfway to 2030, gender equality is way off track, actually, in the SDGs. Only, Goal 5, none of the areas of Goal 5 are close to being met. So we urgently need to invest more and continue to push along for equality. If current trends continue, there will still be 340 million women and girls living in poverty by the year of 2030. And that's close to, 1 in 4 will also experience food insecurity. So the gender gap in leadership positions remains entrenched, and our own gender snapshot from UN Women says that it will take another 130 years to reach full parity in parliaments around the world. And there is a staggering gap of finance. So it will take $360 billion every year for the next years to try and close these gaps in the Sustainable Development Goals. The OECD, which is the Organisation for Economic Cooperation and Development, finds that only 4% of ODA, that's Overseas Development Assistance, is spent specifically on programs that benefit women. In India, which has an incredible contribution to financing through CSR funds of the private sector, but actually only 2% of those funds are spent on women's empowerment, and that's 12,260 crore of finance. Only 2% of that goes to women specifically. So, why is it so? Why is it that there are still these gaps in financing, both from, development partners, from the private sector, and from government? Though government in India actually has improved the investment in gender equality, and I'll get to that in a second. But still, as a practitioner, and many of you here are also, I think that there are some really obvious reasons why there continues to be this gap in financing. One of those, of course, is that bilateral governments may not have women at the decision-making tables deciding on what kind of aid is funded. They may not have policies about the spending of aid and how that should target women and men. There can be a lack of technical know-how. So they may really want to spend more on gender, but not quite know how to invest in the best way. And also there's this pushback on women's rights around the world. So, some of those rights that have been enshrined across the world are being eroded over time, and that has an impact on the flow on of funding as well. So today, that's why we're celebrating this book so much, because it's really showing women in leadership and the impact that you all make in your local communities. Of course, we need women in leadership at all dimensions of society, but in this case, we really wanted to showcase the impact of women at the grassroots level or in local communities to show development partners and others globally that if you invest in these capacities, you will bring about change for everyone. So our book, which was done in the spirit of true partnership, When Women Lead, is really a beautiful coffee table book, and it celebrates the achievements of 75 women around the country. There was a very lengthy process to find women, to double check the claims of women, and to really make sure that we had picked a really good cross-section. We could have written a book that had 1 million stories or more. And I'd love to continue to collect those stories over time. But I think the 75 stories we have are a great demonstration of women's leadership in a range of different sectors, different contexts, different cultural contexts,
and different kinds of work that is being done. And these 7 stories really showed us and reinforced to us the model of women's leadership that women demonstrate. So some of the different styles were really striking. So we found from the stories that women said that it was very collective leadership. You know, often women were bringing other women with them on this leadership journey. So as Archana Mane says, one of the writers one of the stories in the book, when one woman breaks barriers and sets out on her journey, she inspires other women to do so too. So this thing about bringing others with you. Also, we found that often adversity really spurred on women's leadership. So women who'd been through hardship themselves felt really passionately that they wanted to benefit other women, learn from this, grow their own confidence and benefit other women. So as Sandhya Gupta says, I've often been one of the few women wherever I've gone. It didn't discourage me. Instead, I saw it as an opportunity. Oh God, I'm getting all teary. So women leaders at grassroots level, they're often also visionary and inspirational. As you can see, I'm moved by these stories. As Swati Singh says, women who've organised themselves have never lost and will never lose. Women often use really creative and innovative approaches too. Often that is born out of necessity because women don't necessarily have all the money and tools at their disposal. You know, they have to innovate to really scale up what they're doing. As Pabiban Rabari says, I'm not very highly educated and yet I'm running a successful business. Women should not doubt themselves. If they set their mind to do something, they will do it. Women often mentor others, as I've said, and they often do this whilst pioneering in male-dominated sectors. So as Thinless Charles says, and she's a guide in the Himalayas, if we are women who are confident and hardworking, no one can stop us. Women value this transformational approach too. You know, it's not just leading for the sake of it or leading for self-glory. It's also transforming the cultures and the communities and the families that these women come from. As Kaniz Fatima says, when women work to empower their sisters, they also empower themselves, building a formidable solidarity that can tackle insurmountable odds. Women are often grounded from practical experience. As Pratima Joshi says, you will make mistakes and you need to be honest about them. It's the only way you'll learn and build community trust. And lastly, they also really demonstrate empathy and this collective well-being over hierarchy at times. As Nirmal Chandal says, women are eager to stand on their own feet together. So when women lead, it's a tribute to all of you. It's a tribute not just to the resilient spirit of women leaders in India, but it's also to your concrete contributions towards nation building. This coincides with the government of India's aspiration for women-led development, which was so ably demonstrated through the G20 declaration, the Delhi Declaration, where the Indian government really raised, for the first time ever, actually, in these global conversations, the idea that women have to be key partners to development across all dimensions, that women are 50% of the populations and we are a force for change. We're not a small, vulnerable group. Though there are women who are in vulnerable situations, but we're also together a huge global force for change. So this book really spotlights why it's important to invest in women and what women will do with that investment.
So I'm glad to welcome you here today, and I just want to finish up with some other words of the women in the book. Each woman was asked to describe themselves in a few words, and so these are some of them. One woman said, "I am flight." Another woman said, "I am power." Another woman said, "I am a disruptor." And another woman said, "I am the wind." So before I start weeping, I think that takes us to our next agenda, and let's have this wind of change blow through our audience to influence India and the global stage as well. Thank you very much for coming today. Thank you, Susan, for your inspiring words and sharing the moving snippets from the coffee table book. As we gather today for the launch of HUM, When Women Lead, supported by Ford Foundation, we couldn't be happier to have Miss Hilary Pennington, Executive Vice President of Programs from the global team of Ford Foundation. I now request Ms. Pennington to share a few words. Thank you so much. And I couldn't be happier to be here with all of you. So just a huge thank you to Susan and to our partners, to all of you whose stories are featured in this book, this beautiful, astonishing book. And I would just echo your words. You know, when women lead, all of us benefit. All of us do. And Susan talked about some of the sobering facts that we all need to hear and feel an enormous sense of anger and urgency and commitment on the one hand. And on the other hand, to remember that women make the impossible possible. That's what we do. That's what we do. And although there are daunting challenges ahead of us, this book and the people, the women that it features, make me so hopeful that we will make progress that astonishes and surprises the world. And I would say India in particular will help to lead the way in that regard. You know, the Ford Foundation has been in India as a partner for 72 of your 75 years of democracy, walking alongside this country through its remarkable transformations. And as someone from the US, a woman in the US that has never had a woman president, where the representation of women in politics is smaller than the representation here, which has no laws that specify a percentage of participation in political life and elsewhere. I have enormous respect for what you are doing and just the sheer scale of ambition and imagination of this country. I think the world has so much to learn for what you are doing. And I know we will get to hear examples of that through the course of today. But the leadership you've taken in political representation, the fact that you have something called gender-based budgeting, that would be unheard of in my country, and all the forms of that you have pioneered, self-help, women's organizing and collectives. So I just want to really share my admiration for all of you. And, you know, just to say that the people that we will get to hear from shortly really represent the rocket fuel of what Ford has felt through all of our history, fuel societies forward, which we like to call 3 I's, but it's an investing in ideas and in individuals and in institutions. And all of the women we will hear from today have given us ideas, and they have built institutions that are changing the world. So it is just such a gift to have been able to participate in this work. It's such a gift to be able to be here and to see the stories that we are about to hear. And also to know that today is not the launch of a book. It's not the end, although we have a beautiful, astonishingly beautiful product, but it's the beginning of ongoing work that we will do together with UN Women over these next years, and hopefully in partnership with all of you, where we're taking the work forward to make these ideas and examples more real for more people. So thank you so much for having us here and for the opportunity to partner with you.
Certainly, Miss Pennington, women can make the impossible possible. Thank you for sharing your thoughts and for being with us here today. मैं अकेली ही चली थी, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस इन्हीं कुछ खूबसूरत शब्दों को सच का रूप देती कुछ महिलाओं की जीवनी का एक संग्रह है, जिसे यूएन वुमेन ने कॉफी टेबल बुक का रूप देने की एक छोटी सी कोशिश की है। इन प्रेरणादायक महिलाओं की कहानियां हर महिला के भीतर छिपी क्षमता को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती हैं। As Urvashi Butalia has captured in the book that, and I quote, as we meet the women in their beautiful photographs, you will become familiar with words like courage and determination, barriers, difficulties, support, and not least, dreams and desires. Every woman here carried a dream in her heart. Sometimes it was as simple as wanting an education. Sometimes it was seeking a better life for her family. At others, it was wanting to touch the skies. And as these stories tell us, all it takes for a woman to fiercely own and work to make her dream come true is the smallest of opportunities. Give her that, and she will surmount even the most formidable of obstacles. And I unquote. May I please request Miss Susan Ferguson, Miss Hilary Pennington, and Miss Reshma Anand to come on stage for the unveiling of the book. Can I request to dim the lights? We have a video. हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे।
इस कोर्स को करने का हमारा एक ही मोटिव था कि हम अपने जो हमारे गर्ल्स होती है उसे हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाए. We are agents of change who are continuously breaking barriers and are resilient leaders who are going to change the future. We can overcome challenges together with resilience, gratitude, and grace. We are committed to do what we want, so no one can stop us. संगठित महिलाएं न कभी हारती हैं और न कभी हारेंगी. Splendid. What a tribute to the spirit of women. झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं. झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं. अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं. As we move on to the next segment, let's hear the stories of some of the women featured in the book. I hand over the mic to Ms. Reshma Anand, Regional Director, Ford Foundation, to moderate this conversation. May I request Ms. Archana Mane, Grassroots Leader, Drishna Kalita, Sandhya Gupta, Meenu Arora Mani, Kanis Fatima, and Swati Singh to join us on stage. So Susan and to the entire UN Women team, thank you for this partnership. I was just talking to the team, मैं UN Women की टीम से बात कर रही थी बाहर कि हम 9 महीने पहले इसी कमरे में थे. And it took 9 months for us to, to kind of, travel this distance together. And I thought that, I was sitting there and saying, well, Susan's feeling all teary-eyed. And then I see the film and I can feel like I'm all choked up as well. So thank you. This is not just a book for us. It, goes back to the substance of our work in India and why we do what we do. And the work that women do never ceases to amaze us. But we're also kind of tired of making our case repeatedly as well. So we're hoping that, as we celebrate this moment, we also move forward and we, seize
the opportunities and the space that's truly ours going forward. I also recognize, Susan कह रही थी कि लाखों कहानियां लिखी जा सकती है महिलाओं के बारे में। हमने 75 की हैं और उनमें से आप लोग 6 हैं जो सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमारा बस चले तो हम और काम नहीं करें, लेकिन आपसे बात करते रहें। लेकिन ये शुरुआत है और आज इस जरिए वी विल हियर फ्रॉम यू एंड ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सभी की कहानियाँ कहने को, सुनने को हम सबको मौका मिलेगा। So thank you very much. I didn't realize that 75 is a large number, but we will make sure that we do justice to the stories as well. So thank you to the writers, to the photographers, to partners in the room, everyone who's made this possible today. I'm also delighted to see some familiar faces. So that's also, a sense of just the solidarity that we have, different roles that I've played, and I see, familiar faces in the room, and it just kind of warms my heart that we're a tribe that never really goes away. So we stick it together, through the course of our lives and our careers as well. So really, gratified to be in the room as well. So thank you. आप लोग सब कहाँ से आए हैं पहले ये बताइए। आप यूपी आजमगढ़ से आई हैं। अर्चना, महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र में कहाँ से आए हैं? उस्मानाबाद से आए हैं। Sandhya Gupta from a village called Kandbadi near Palampur in Himachal Pradesh. नमस्ते सबको, मैं आसाम हाजू आसाम से हूँ। मेरा नाम है दृशाना कलिता। सभी को नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है और मैं वाराणसी बनारस से हूँ। स्वाति। नमस्कार, मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा नाम मीनू मनी है। तो अर्चना, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आपने जो अपने परिवार की जो समस्या थी उसको तो सुलझा दिया, फिर पूरे समूह तक पहुंचने का कहाँ से आपको लगा, और अभी तक आप कहाँ तक पहुंच पाई हैं और आशा क्या करती हैं कि आगे कहाँ तक जाना चाहेंगी? इतने अच्छी तरह से हिंदी भी बोल नहीं पाती हूँ, मराठी बहुत अच्छी तरह से बोल सकती हूँ। कुछ शब्द है वो मुझे हिंदी में नहीं आते। तो जो मेरा परिवार था, हम एक गरीब परिवार से जुड़ी हुई हूँ और हमारे गांव को 25 साल से बस और रोड, लाइट, पानी उसकी समस्या थी, मगर किसी ने आवाज नहीं उठाई। जब रोड की समस्या थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मेरे बेटा पेट में था, तो उस टाइम मुझे बहुत पेन हो रहा था और गांव में आने के लिए और जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। उससे मुझे मोटिवेट मिला कि मैं गांव के लिए कुछ कर सकूं। जैसे कि मेरा बच्चा डिलीवरी होने के बाद वो 3 दिन तक वो आईसीयू में था और मैं भी थी, तो उससे मुझे लगा कि मैं जब डिलीवरी मेरी हो गई तो मैंने सोचा कि मुझे गांव की महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उस गांव में 25 साल से रोड नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, एसटी की सुविधा नहीं है। तो ऐसे गांव में महिलाएं बहुत, और हमारा गांव है कि बुर्खा पद्धत जो होती है, गांव के बाहर महिलाएं नहीं निकलती, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। और मैंने फर्स्ट टाइम ये शुरुआत की कि मैंने जब मेरा बेटा बीमार हुआ 2006 में, तब मेरे बेटे के हाथ में 10-10 रुपए किसी ने थमा कर दिए थे। उससे मैंने ज्वेलरी खरीदी की थी और उस ज्वेलरी से मैंने गांव की महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया था। उस 250 रुपए में मैंने ज्वेलरी खरीदी की, क्योंकि उतना गांव में 10 रुपए महिलाओं के पास नहीं आते थे। मेरे बेटे के हाथ से जो जैसे कि उनको खाने के लिए कुछ पैसे ये मिले थे, उससे मैंने ज्वेलरी का व्यवसाय शुरू किया। और गांव के महिलाओं को मैंने व्यवसाय बोल के नहीं, कि गांव के महिलाओं को मुझे इकट्ठा करना था। इसकी वजह से गांव की महिलाएं मेरे पास टिकली हो, कोई बिंदी हो, कोई चूड़ी हो, वो लेने के लिए आती थी। उनको बोला कि हम इकट्ठा होकर हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो उस ग्रुप में से पहले तो महिला बोली कि नहीं, हमारे घर के बाहर उन्हें नहीं आने देते हैं, वो बाहर जाएंगे तो महिलाएं बिगड़ जाती है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ टॉयलेट भी नहीं थी उस टाइम,
टॉयलेट के लिए सुबह 4 बजे और शाम के 7 बजे के वो टॉयलेट को भी जाना पड़ता था। तो वो भी बहुत बड़ी समस्या थी, पानी नहीं था तो टॉयलेट कहाँ से आएगा। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमने महिलाओं का एक ग्रुप बनाया। बहुत मुश्किल 6 महीने लगे हमें एक ग्रुप बनाने के लिए। 20 महिला का एक ग्रुप बनाया और हमने 10-10 रुपए उसमें इकट्ठा करना शुरू किए। और फिर बाद में ये महिलाएं जुड़कर उन महिलाओं को साथ में लेकर हमने कुछ ऐसी गांव की समस्याएं उनके सोच में डाली। जैसे कि तुम अभी मुझसे बहुत बड़े भी महिलाएं हैं, तुम्हारी शादी होकर 25 साल हो गए, गांव में रोड नहीं है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बहू है, तो उसको भी टॉयलेट नहीं है, सुविधा नहीं है, तो उनके दिमाग में डाल दिया हमने। तो फिर उन्होंने हाँ हाँ वो सच है, अर्चना कर रही है तो वो सच है। हम ग्राम पंचायत में गए, ग्राम पंचायत में हमने गांव की जो जो सुविधा चाहिए उनका एक ठराव लिख के दिया। तो उस ठराव को डालने के लिए महिलाएं ग्राम पंचायत में नहीं आ रही थी। तो हमने बोला हमारा हक है ये, क्योंकि जो हमारे बच्चे पे बीता है वो तुम्हारे बच्चे के भी बीत सकता है, बहू पे के भी बीत सकता है। तो हमने ग्राम पंचायत में ठहराव लाने के 3 महिलाएं मेरे साथ आगे जाकर, वो जैसे कि 45 ईयर एज की होगी, वो मेरे साथ आई और उन्होंने बोला कि हाँ गांव के लिए कुछ तो करना चाहिए। उसके वजह से हम बाहर पड़े और महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। और अब कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ? अब मेरे साथ तो अब मैं 17 साल से काम कर रही हूँ, तो मेरे साथ 65,000 से ऊपर महिलाएं के साथ जुड़ी हुई हूँ। उनमें जैसा कि खेती का ज्ञान देना है, जैसे कि उनके छोटे छोटे व्यवसाय में उनको लाना है, पानी का ज्ञान देना है, क्योंकि हमारे गांव को 25 साल से पानी नहीं था। तो पानी का वाटर बजटिंग कैसे करना है वो भी हम महिला को सिखाते हैं। जैसे कि गांव का जो छत पर का पानी है उसका शोष खड्डा बना के उन पर, जो शोष खड्डा एक तो बनाना है, दूसरा है कि किचन गार्डन करना है। ऐसे उनको सोच डाली। तो अब हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे कि महिला, हमने बोला, हमने एक सर्च किया था, सर्वे किया था, उसकी वजह से हमारे ये आया था कि हम कुछ फंड देते थे, 10,000 हो, 5,000 हो। जैसे कि हम गट का भी कोई कर्जा देते थे, उसमें एक तो कर्जा वापस नहीं आ रहा था, दूसरा है कि वो कर्जा नहीं आ रहा तो वो कहाँ जा रहा है पैसे। आमदनी तो महिलाएं कुछ कुछ कमा रही है, मगर वो कहाँ जा रहा है। तो एक तो महिलाओं के या घर के हेल्थ के लिए जा रहा था, दूसरा है खेती के ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा था। तो हमने उसको पूछा ऐसा क्यों। तो उस टाइम हमारे उस्मानाबाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्रॉप पिक के लेते थे, जैसे कि सोया है, गन्ना है, ऐसे लेते थे। जैसे फूड सिक्योरिटी कोई नहीं थी उधर, जैसा मूंग है, उड़द है, दाल है, जैसा कि कोई सब्जियां है, ज्वार है, गेहूं है, ये हमारे घर में नहीं होता। हम फार्मर है मगर हमारे घर में नहीं है। इसकी वजह से बाजार से जो सब्जियां लाते थे हमारे महिलाओं के हिस्से में नहीं आती थी वो सब्जी। इसकी वजह से हमने क्या किया कि किचन गार्डन का, पहले तो हमने किचन गार्डन बनाना शुरू किया। उसके बाद में हमने हमारे आदमी लोगों को झगड़ कर 10 गुंठा या 2 गुंठा या 5 गुंठा हमने जमीन उनसे मांग कर ली, और उस जमीन से हमने जैसे कि सब्जियां है, कुछ मूंग है, उड़द है, ऐसे कुछ हमारे फूड सिक्योरिटी के लिए हमने उस खेती में लगाना शुरू किया। तो हमारे साथ पहले ही वर्ष में हमने हमारे गांव की 165 महिलाओं को इकट्ठा करके हमने उसकी शुरुआत की थी। थैंक यू। Sandhya, I wanted to, bring the conversation. You know, what strikes me in Archana's story as well is she kept saying we, हमने ये कहा, right? And it's also very interesting that your journey started from a personal experience, and now it has, evolved into a very, powerful way of engaging girls in STEM. So, just if you could take us all through a very quick snapshot of your journey and where do you stand today? What are the challenges? Okay, thank you. First of all, thank you for doing this. I generally, because I work in STEM, I generally don't see a room full of women. So first I want to kind of give you a sense of the problem. So please engage with me and try to do a simple addition. How much is 28 plus 35? I do not want to know the answer. I want you to
think about that feeling that happened in your heart. I will not be surprised when many of you will say fear, right? And I can assure you, most of us sitting in the room have gone through at least 10 years of mathematics. That should not be the case. And this is the problem we are working with. It happens more in women, but it happens in men also. In this case, the problem of mathematics is rather equanimous, right? But we suffer the brunt of it because many of us, in spite of our economical status, don't take care of finances in our house, right? That is the problem. And this is the problem specifically for women that I want to change. In my beginnings, I started out loving mathematics. I started out wanting to make money. And I got lucky that I had a mother who supported and a family of sisters with no brother. Right? That's lucky. Right? Yes. Yeah. Yeah. So I became an engineer, and then that desire to learn more, study more, make more money took me to US. I did my PhD in electrical engineering. I'm not a real doctor, so don't come to me for any human help. And then I came back to India in 2009 with a young daughter of 5.5. And I walked into my government school, nearby government school, to register her there. And that's when I kind of was reminded of all those problems that I had faced as a child. And I saw the problem, this hidden problem of language and mathematics that exists in our country. Why is it that our students cannot speak or clearly express them in the language that we learn and the math that we need to do? And this is the problem we decided to work on. So we work with, I'm taking your question a bit further. So our mission through the organization Avishkar is to remove the fear of mathematics as much as possible. And this fear happens because of our fear in students happens because of our teachers. And my students exist in the classroom, outside the classroom, and in the homes. So whoever is the teacher needs to know better mathematics. And our first teachers happen to be our mothers. So if I can make women confident enough to become math educators, then I would be working on their financial problems of today, making them confident there. That means they will be decision makers of the family. And that also means that they would be the role models of their community. And that also means we would be solving the problem of students who are the leaders of tomorrow. So all this together in one is what I do, and I absolutely love to do it and having a lot of fun in it. So, Sandhya, thank you for the on-the-spot test that I'm sure brought out lots of not so happy memories for many of us in the room, but you make a very pertinent point that I don't know how many of us are still very confident of
managing our finances. We think we know how to do it, and yet we question and judge ourselves constantly. So thank you for the work that you do. And yes, I think our mothers should also be in this room. Thank you. Meenu, I'd like to reach out to you now and, really want to, understand from your own personal journey, where have you felt the need for allies, and what would strengthen your own path going forward? एक्चुअली मेरा जो स्ट्रगल है जब मैं पैदा हुई थी ना तभी शुरू हो गया था। लोगों ने मुझे रिजेक्शन बहुत दिए हैं, तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया है। मैं रिजेक्शन की वजह से यहाँ पे हूँ, और रिजेक्शन जो है ना वो मेरी पावर है। मेरे को मेरी माँ ने संभाला, और बाकी सब ने ये कहा कि ये क्यों इसको पाल रही है, क्यों बड़ा कर रही है, आगे जाके इसने क्या करना है। तो एक छोटा सा जो मेरा सपना था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, वो पढ़ने का सपना तक मेरे को नहीं मिल रहा था। मैं पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल किया, और शायद आप मुझे लड़ाकी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने प्रिंसिपल से झगड़ा किया था क्योंकि मुझे एडमिशन चाहिए। तो जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं उस उम्र में बैग टांग के, टिफिन लेके, बुक लेके बाहर खड़ी होती थी कि कोई जो वैन आती है वो मुझे भी लेके जाएगी और स्कूल पहुंचाएगी, और वो वैन नहीं आती थी। मैं खड़ी रह जाती थी इंतजार में। मेरी मम्मी कहती थी अभी उसमें जगह नहीं है बेटा, जब जगह वो छोड़ आएंगे ना, उनको खाली हो जाएगी, फिर तेरे को दोबारा लेने आएंगे। अब मैं वहां पे वेट कर रही हूँ। मम्मी कहती है अभी खाना खा लो जो लंच पैक करके दिया है तुम्हें, तब तक गाड़ी आ जाएगी। और इतनी देर में छुट्टी का टाइम होता था, सब लोग घर आ जाते थे। अब तो सब घर आ गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं। तो 7 साल तक मैं इसी तरीके से वहां खड़ी होती थी, वेट करती थी कि कोई वैन आएगी और मुझे स्कूल लेके जाएगी, जो नहीं आई। 7 साल के बाद मेरे पापा को समझाया गया कि इसको स्कूल ले जाना है, लेकिन स्पेशल स्कूल में, क्योंकि किसी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। और जो केयर पेरेंट्स चाहते हैं वो केयर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने आप न खा सकती थी, न पी सकती थी, और जो वॉशरूम जाना है वो तक मैं अपने आप नहीं कर पाती थी। ये अंदर का जो डर था ना पेरेंट्स का, मुझे ही परवाह नहीं थी क्योंकि मुझे कोई इससे वो नहीं था, लेकिन उनको था कि कैसे करेगी। तो 7 साल के बाद जब मुझे स्कूल में एडमिशन मिला, आ, उस टाइम पे मेरे लिए पता नहीं क्या ऐसा था कि मुझे क्या खुशी मिल गई है कि मैं स्कूल जाने लगी हूँ। और फिर वो जर्नी 5 साल तक की थी। 5 साल के बाद फिर से मैं उसी जीरो पे थी, क्योंकि 5 साल के बाद, 5th के बाद फिर कोई स्कूल नहीं था मेरे लिए। जब एक छोटा सा स्कूल, वहां पे कोई बिल्डिंग नहीं थी, गवर्नमेंट का टेंट वाला स्कूल था, वहां पे जाने को मैं तैयार थी, पर वो भी टीचर प्रिंसिपल ये कहती है कि इस लड़की को आप कैसे पढ़ाओगे, हमारे स्कूल के बच्चे इसको टीज करेंगे, धक्का देंगे, फिर आप क्या करोगे, इसका होमवर्क लिखने का कौन करेगा। सारी गारंटी मेरी मम्मी ने ली। फिर भी दे सेड हम आपको रजिस्टर नहीं कर सकते, अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो ऐसे ही आप क्लास में आओ, पढ़ो और जाओ, गारंटी नहीं लेंगे हम। तो यही सिलसिला 6 महीने तक चला। 6 महीने तक मैं वहां पढ़ती रही और बहुत अच्छे मार्क्स में एग्जाम भी क्लियर किया।
6 मंथ के बाद दे सेड कि आपकी वजह से हमारी क्लास में डिस्टरबेंस हो रही है, क्योंकि बच्चे तुमसे बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और हमारी क्लास बिगड़ रही है क्योंकि वो मेरे एग्जाम जो मैं लिखती थी उसे वो चीट करते थे और क्लास के अच्छे मार्क्स आने लग गए थे। तो इस तरीके से मैंने वो 6 मंथ निकाले, फिर एक स्पेशल स्कूल ढूंढा जहां उन्होंने मुझे 10th तक पढ़ाया। तो 10th करने के बाद फिर से मेरी स्ट्रगल शुरू हो गया। अब मेरा 10th क्लियर हो गया, अब मैं 12th कहाँ से करूं। फिर एक इंक्लूसिव स्कूल मिला, उन्होंने मुझे हेल्प की। मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड थे उनकी ड्यूटी लगा दी कि भाई इनको चेयर पे बिठाओ और 2nd फ्लोर तक उठा के लेके जाओ, क्योंकि उस टाइम पे स्कूल में लिफ्ट नहीं थी। और मुझे ये जान के अच्छा लगता है, आज मैं उस स्कूल में जाती हूँ, वहां पे लिफ्ट है, वहां पे मेरी तरह और भी पर्सन विद डिसेबिलिटी वहां पे पढ़ने जाते हैं। तो जो रास्ता, जहां प्रॉब्लम मैंने देखी थी, आज मेरे बाद जो मेरे जूनियर्स हैं उनके लिए रास्ते खुल गए हैं। तो जो मुझे इतनी सारे, एक छोटा सा एजुकेशन का जो राइट है वो मुझे लेने में, मुझे वहां तक पहुंचने में इतना स्ट्रगल करना पड़ा। सोचो, अगर एक महिला की लाइफ, जब हम आपस में बात करते हैं कितनी प्रॉब्लम है, तो सोचो एक मेरी जैसी व्हीलचेयर पे अगर एक कोई महिला है तो उसकी प्रॉब्लम 4 गुना बढ़ जाती है। हम अगर खाली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हेल्थ, क्या मैं व्हीलचेयर पे हूँ, क्या मुझे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? मैं हेल्थ इश्यू अगर हो तो मैं कहाँ जाऊं, किससे इजीली मैं पहुंच सकती हूँ? मेरे आसपास के डॉक्टर मुझे देख के कहते हैं कि आपका जहाँ पे इलाज चल रहा है ना, आप उसी हॉस्पिटल में दिखाओ, आपका बीपी चेक नहीं कर सकते। अगर मेरे को मेमोग्राफी करानी है, कितनी छोटी सी बात है, सब लोग कहते हैं कि आजकल ब्रेस्ट कैंसर का टेंशन चल रहा है, मेमोग्राफी करा के चेक करवाओ। कितना मुश्किल है, मेमोग्राफी की मशीन के लिए खड़ा होना पड़ता है। जब मैं खड़ी नहीं हो सकती, इसका मतलब मैं चेकअप नहीं करवा सकती। मुझे सेरेब्रल पाल्सी है और मेरी बॉडी मूव करती है। सब लोग यही मुझे कहते हैं, ठंड लग रही है क्या, आप इतना हिल क्यों रहे हो, स्टेबल रहो, एक्सरे नहीं कर सकते, आपका बीपी चेक नहीं कर सकते। छोटी सी बात बीपी चेक करना डॉक्टर मुझे मना कर देते हैं। तो छोटी 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 ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस किए हैं, वो आज मैंने एक जो ग्रुप बनाया है जिसपे मेरे साथ 250-300 लोग जुड़े हुए हैं, यस वी कैन के थ्रू मैं उन तक अपने एक्सपीरियंस शेयर करके उनको आगे बढ़ा रही हूँ। एक छोटी सी चीज है इंडिपेंडेंस, लाइफ में इंडिपेंडेंस नहीं है तो कहाँ जाएंगे, कैसे? अपनी पसंद के कपड़े पहनने की इंडिपेंडेंस नहीं है, अपने पसंद का खाना खाने की इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट, हम सब पे डिपेंड हैं। तो वो इंडिपेंडेंस को, इंडिपेंडेंस छोटी सी चीज के, अगर मोबिलिटी लाइफ पे है, अगर मैं आपको देखना चाह रही हूँ और मैं इस तरह बैठी हूँ, तो अगर मेरे को कहीं और देखना है तो मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी, मेरी व्हीलचेयर को घुमाओ ताकि मैं उधर देख पाऊं, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं कर सकती। इस तरीके से मल्टी डिसेबिलिटी वाले लोगों के साथ मैं काम करती हूँ। उन मेरी एक छोटी सी एक स्टेप था कि मैं उनको मोटराइज व्हीलचेयर प्रोवाइड करवाऊं ताकि वो अपनी मोबिलिटी एटलीस्ट सेलिब्रेट कर पाए, कि थोड़ा सा मोबाइल होके वो इधर से उधर तक जा पाए। तो इस तरीके से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, बहुत सारी रिजेक्शंस के साथ। अभी इतनी सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं कर सकती। थैंक यू, सॉरी। मीनू, जब आप बात कर रही थी कि
किस तरह से रिजेक्शन ने आपको इतना फ्यूल किया है। मैं यही सोच रही थी कि हम लोग काफ़ी छोटी छोटी रिजेक्शन से कितने निराश हो जाते हैं, और जिस तरह से आपने बस रिजेक्शन को ही अपना पावर बना के आगे बढ़ी हैं, और जो आपने ग्रुप भी बनाया है, इट इज़ क्वाइट रिमार्केबल दैट you have warmth and love and towards the community, and your requests are small, and thank you for putting them out for all of us to consider as well, and thank you for being with us. Really, really thank you. And thank you to your mother. Kanis, I'd like to come to you now. आपने भी बहुत संघर्ष किया, जो आप करना चाहती थी, और जो आप काम कर रही हैं वो भी आसान नहीं है। तो संक्षिप्त में अगर आप बता पाएं कि आपका क्या सफ़र रहा है और अभी कहाँ तक पहुँची हैं, और आगे बढ़ना चाहती हैं तो उसमें आपको क्या मदद की ज़रूरत है। मेरे जो सफ़र की शुरुआत हुई थी वो एक्चुअली 5वीं पास करने के बाद से शुरू हुई थी। मैंने 5वीं तक एजुकेशन के मामले में तो जो शुरुआत थी वो थोड़ा सा हो गई थी, क्योंकि फादर का बिजनेस चल रहा था, अच्छा था, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी, लेकिन उसी दौरान उनका बिजनेस जो हो गया वो पूरा तरीके से ठप हो गया। अब चिंता इस बात की थी कि कॉन्वेंट स्कूल में कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि बहुत हाई फीस होती है। उसके बाद मेरी माँ और पिता दोनों पढ़े लिखे थे, तो उसके बाद मुझे चैरिटी वाले एक स्कूल में दाखिला मिल गया। तो वहां से मैंने 5वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद 6 में मुझे एडमिशन लेना था, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं चैरिटी वाली स्कूल से उर्दू मीडियम से पढ़ाई की थी, और 6 में जाने के लिए मुझे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन मैंने कॉन्वेंट स्कूल में जो थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ी थी मैंने उससे शुरुआत की। मैंने 8th तक की पढ़ाई शुरू की। जैसे ही मेरा 8th कंप्लीट हुआ, हमने गांव शिफ्ट कर दिया बिजनेस के सिलसिले में, क्योंकि उस वक्त मेरे पापा फिर से बिजनेस इस्टेब्लिश कर चुके थे। जब मैं वहां पे गई तो गांव में गई तो वहां पे बिल्कुल पढ़ाई का माहौल ही नहीं था। जो सरकारी स्कूल होता था उसमें कुत्ते बंद बैठे होते थे और ताला लगा होता था। तो फिर हम लोग जब वहां पे मैं 9th में पढ़ने गई तो गांव का एक ग्रुप था, वो मेरे घर पे आया और बोला कि नहीं पढ़ने जाना है, क्योंकि मेरे मेरे फादर जो थोड़ा था समतावादी थे, तो उनको ये पसंद नहीं था कि मेरी बेटियां किसी के साथ जाएं कहीं। तो हम लोग बोलते थे, मैं बोलती थी कि मुझे स्कूल पहुंचा दीजिए, तो उनको कहना था कि नहीं आप अकेले जाओ। तो मैं अकेले जाती थी, तो गांव वालों को बहुत एतराज होता था। वो आए और बोले कि नहीं स्कूल नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे गांव में कोई लड़की स्कूल नहीं जाती है। क्योंकि उसी दौरान हम लोगों ने गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल था उसको भी खोलना शुरू कर दिया था। टीचर से बात करना शुरू कर दिए थे कि यहाँ पे कुत्ते क्यों बैठ रहे हैं, ये तो बच्चों की पढ़ाई के लिए जगह है। तो वहां पे कुछ बच्चों ने जाना शुरुआत भी कर दिया था। तो काफी कन्विंस के बाद गांव में ये हुआ कि अच्छा ठीक है, 10th पढ़ लो। 10वीं पास हो गए। मैंने गांव में किसी को नहीं बताया कि मैं 10वीं पास हो गई हूँ, क्योंकि उस साल का जो बोर्ड हुआ था 365 लड़कियों में से सिर्फ 35 लड़कियां पास हुई थी, बाकी सब फेल हो गई थी। तब भी मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं पास हो गई हूँ, क्योंकि ये डर था कि यहीं से मेरी पढ़ाई एंड होने वाली है। लेकिन मैंने चुपके से 11 में एडमिशन लिया। गांव वालों को पता चला कि अरे तुम्हारा तो हाई स्कूल हो चुका है, फिर कैसे तुम स्कूल जा रही हो। तो उसके बाद फिर कन्वेंस ऐसे ही शुरू हो गया। 12 तक की पढ़ाई हुई, लेकिन अब एकदम फुल स्टॉप की ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं करनी है। उसके बाद काफी विचार के बाद, क्योंकि मेरे फादर और मदर पढ़े लिखे थे, इसलिए एजुकेशन को वो बहुत ज्यादा महत्व को समझते थे। फिर मैंने 12 किलोमीटर पे अपना गांव छोड़ा और मैं हॉस्टल में रहने चली गई। लेकिन समस्या जस की तस बनी थी, क्योंकि मैं उनको लगती थी कि मैं क्रांतिकारी विचारधारा की हूँ। तो टाइमिंग थी कि आपको 35 मिनट क्लास चल रही है, 35 मिनट में वापस आ जाना है। और मैं काफी फ्रेंडली, इनसे बात करते हुए उनसे बात करते हुए उनसे पहुंचते पहुंचते मुझे आधा घंटा मैं लेट पहुंचती थी। रोज शाम को मेरी वार्डन क्लास लेती थी, इतने मिनट लेट कहाँ। मैंने कहा मैं जवाब देने के लिए तय नहीं आपको। फिर 1 साल के अंदर अंदर मुझे ये कह के निकाल दिया गया, और वो बहुत ही प्रोग्रेसिव लेडी का वो हॉस्टल था, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगी। मुझे ये कह के निकाल दिया कि तुमने खुला आसमान देखा है, ये हॉस्टल तुम्हारे लिए नहीं है।
तो इसके बाद फिर मेरी समस्या वहीं की वहीं आ गई कि 1 साल तो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, 2 साल मैं कैसे करूं। फिर काफी गांव वालों को इकट्ठा गांव वालों से बातचीत की गई कि ये गाड़ी लगाता हूँ, डेली आएगी जाएगी, और जितनी क्लास चलेगी उतनी ही में ये रहेगी, फालतू कहीं आएगी जाएगी नहीं। उसके बाद ये हुआ, गाड़ी वाले से बातचीत की, मेरी बेटी अगर कुछ करती है तो इसका जिम्मेदार मैं हूँ, ड्राइवर नहीं है। तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, उसी दौरान मेरे फादर की रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। फिर समस्या जस की तस पड़ी, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था। तो मैंने अपनी माँ से बोला कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास 5 औलादें हैं, मैं तुमको सिर्फ पढ़ाऊंगी तो 5 को मैं पीछे कर दूंगी, इसलिए मुझे बराबर में लाने के लिए तुम्हारी एजुकेशन को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे सिलाई का बहुत शौक था, मैं अपने गांव में लोगों का बैठ के कपड़े फ्री में सिलाई करती थी खाली टाइम में, तो मेरा हाथ बहुत साफ हो गया, तो मैंने उसका फायदा उठा लिया। तो मैंने कहा कि अगर मैं अपना कमा के खुद से पढ़ूं तो आपको एतराज? तो उन्होंने बोला मुझे कोई एतराज नहीं। फिर मैंने सिलाई के पैसे लेने शुरू कर दिए। फिर मैंने LLB किया, MA किया, MSW किया, मैंने ट्रिपल C किया। उसके साथ ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक एफिशिएंसी का एक डिप्लोमा किया, और मैं कैरियर काउंसलिंग का डिप्लोमा किया। इसके साथ ही मैंने बहुत सारे एजुकेशन लिए। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी, जब मैं लॉ कंप्लीट कर रही थी, फिर मेरे पास एक बार दिक्कतें आई कि वो लॉ कंप्लीट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो किसी ने मुझे सुझाव दिया था कि एक आली संस्था है, वहां पे आप जा सकते हैं। तो मैं वहां पे गई, मुझे आली का काम समझाया जा रहा था, और मेरे दिमाग में चल रहा था बस मुझे पैसे बताओ, मुझे अपनी फीस देना है। मुझे नहीं पता था कि आली का काम इतना डिफिकल्ट है। मैंने एक गांव से अपनी शुरुआत की, क्योंकि मुझे सिर्फ लॉ कंप्लीट करना था। लेकिन जब मैंने काम किया, मुझे लगा कि एक्चुअली जो मेरे फादर चैरिटी कर रहे थे यही काम तो है। मैंने गवर्नमेंट में मैंने विलेज डेवलपमेंट का पोस्ट का मैंने फॉर्म भरा था, इंटरव्यू छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, मुझे करनी यही मुझे करना है। मैं एक गांव में काम कर रही थी, और आज मैं 50 लाख से ज्यादा का आजमगढ़ आबादी वाला क्षेत्र है, जिसे मैं अकेले आजमगढ़ को लीड कर रही हूँ, और सिर्फ एक टीम को लेके मैं कर रही हूँ। तो कनीज आपने कितने कोर्सेज किए? क्योंकि काफी लंबी लिस्ट थी। हाँ, तो लोग जब अपने नाम के साथ साथ डिग्रीज लगा के रखते हैं तो आपकी तो शायद 3-4 लाइनें भर जाएंगी, नहीं? तो हाँ। 6-7 हो जाती है, मुझे भी हाथों पे गिनना पड़ता है। अभी भी मैं कर रही थी, मेरी अम्मी करी अभी स्टॉप हो जाओ, तुम्हें मैं शादी के लिए बात कर रही हूँ, तुम्हें लड़के नहीं मिल रहे। अभी भी PhD का इरादा है, लेकिन लोग मना कर रहे हैं कि नहीं अब जब जो। ठीक, तो प्रोत्साहन तो आपको सबसे मिलेगा यहाँ पे, अगर जो भी आप करना चाहेंगे। अगर PhD भी करना चाहती तो वो मुमकिन तो मैं है। बातचीत कर रही हूँ, लेकिन मुझे प्रोफेसर एक का है बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने बोला कि पहले तुम टाइम दो, तब एक वक्त ऐसा आएगा कि बाद में तुम थीसिस हमसे लिखवाओगी। थैंक यू। Krishna, you've taken a very interesting, journey as well. And in many ways, we've also grown up with stories. And those stories have, defined our aspirations, and also our limitations, right? So, what has really been your journey? And Krishna works with a very interesting art form, and I'm going to leave it to you to share what your journey has been. Thank you. So when we talk of puppetry in India, what is the first thing that comes to your mind? If we say, yes, Kathputli. But in our Northeast also, we have this form, but it is so underrepresented, and there are very few practitioners left because of it's not because of lack of interest, but because it's still a very beloved popular folk form. It's called Putola Nas, and but for some reason, maybe because our artisans don't know whom to approach, how to go about,
it's an expensive art form, and how to get funds, where to go. So they travel from village to and try to make a living. And people outside Assam are mostly, they have not heard about Tolanas. So I have started learning it from a young age, but like most art forms, traditional art forms, especially performing arts, women were not allowed to do putolanas when I was small. But then still I took a backdoor entry and started learning here and there in my village. As I grew up also, I took every opportunity to learn, and I wanted that more Assamese women could come forward to learn, because traditional media is still the most powerful way of telling stories, and we are nothing but our stories. Every community is formed by their stories, and I wanted that girls should also get a chance to tell our stories through our own folk form. And so I also, when I started learning, another aspect which always disturbed me was our folk stories, Assamese folklore and folk stories. They are very beautiful stories, and our mothers, the women in our communities, are the storytellers. But the women are not represented in the stories as I think should have been, because violence towards women and discrimination is very normalized in our folk stories. I think it is true across India, across communities. But personally, because I saw firsthand how violence, especially in our rural communities, was very normalized, because our folklore supported it in a way through the stories, because it was considered normal for a wife to be beaten, because that was in our stories, for a daughter to be maimed. And let me tell you, Assamese folk stories, especially with heroines, are very violent. I mean, I think you have heard of Tejimola. That is one of our most well-known Assamese stories, where the daughter is left at home with her stepmother, and the stepmother doesn't like her, so she chops off her hands and feet and throws her into the backyard, and she grows into a tree. It goes on like that. And so, and this kind of violence, it's like extremely violent, which our children grew up hearing every night from their mothers and grandmothers. And I asked questions about it when I was small. And there was another story called Panesoy, where there is and also the people who are different, they were symbolically represented as vegetables. If a different child was born, they would say, oh, she only had an elephant apple, like a fruit. The queen gave birth to a fruit, not a person. I think it was a symbolic representation of someone who was not normal in like what society accepted as normal. And so they were shunned. But there was always a child inside the fruit. And so this Paneso is another story which was really, which had, I think, propelled me in this journey, that where the girl tries to escape and find her own way, but then she is forced to marry at a very early age. Early marriage is also a very generalized concept in our folk stories. So I tried to, though I was doing puppetry, I thought I was not being able to do what I wanted. So in 2013, I started my group, Puppet People Assam, small group. Since then, I've been trying to travel across Assam and reach the rural communities and try to tell these stories and give the heroines of these stories a voice. Where in our stories, they just, thank you, meekly accept their fate. And getting married to the prince is the ultimate goal in life, in our stories. So, but like when I was telling them, no, I would try to put in the messages of these stories, put these little things like don't marry, like early marriage is a crime. And then in the end, the heroine is starting to question to why didn't I have the right to education? Why did you marry me off so early? And who gave you the right to just take me away from my home? So, to raise those questions. And it was very, and I was not sure how it would be, because when we challenge these stories which are so imbibed in our tradition,
a lot of it could offend a lot of people. But I think I started at the right time, and I think our rural communities were also ready for, I think the women were especially ready to accept these changes in our stories. And so I think everyone came together, and everywhere I went with my little group, I found so much support and love, and these stories were accepted so well. These new folk, they are still the old folk stories, but just with a changed narrative. So where the heroine has a voice. And I think since our stories shape our culture, shape our norms, shape our societal rules, I think the impact has been tremendous that we have started to at least discuss that women have a voice to our folk stories and our folk art. Thank you. So we'd love to see one of your stories someday, for sure. Yes, definitely. I try to reach out to as many people as I can through my small shows, and I hope to do more. Yeah, thanks. Swati, we would like to come to you now. And I know that we tend to normalize every woman's journey as one, filled with challenges and adversity. But जब आपने शुरुआत की और जहाँ तक अब आप पहुंची हैं अपनी संस्था के जरिए, क्या मकसद है आपका और क्या करना चाहती हैं? शुक्रिया सवाल के लिए। और मकसद ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, बस यही है कि जो पढ़ते हैं हम महिलाओं के पहचान की, उसको खोलना और हर परत में जो लीडरशिप की परिभाषा है उसको खड़ा करना। क्योंकि वैसे तो हम कह रहे हैं कि हम हैं, लेकिन हम नहीं हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी पहचान है। हमारी जाति, हमारी भाषा, हमारा पहनावा, हमारा प्रोफेशन, हमारी लैंग्वेज, हमारे पहचान, हमारी चॉइसेस, हमारा मैरिटल स्टेटस, ये सब तय करता है कि हमारी स्थिति, हमारी जगह हमारे समाज में कहाँ होगी। तो स्वाति की जो मुहिम है, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ज्यादा कुछ बड़ा मकसद नहीं है, बस इन्हीं परतों को खोलना है। और जब हम बात करते हैं मार्जिनलाइज्ड की, अंडर रिसोर्स्ड की या हाशिएबद्ध समुदाय की, तो समाज के सबसे आखिरी पायदान पे कौन सी औरत बैठी है जो डिसेबिलिटी, जाति, धर्म, इन सारे पायदान में सबसे निचले स्तर पर है और उसे आज भी पानी पीने के लिए भी लड़ना पड़ता है। उस औरत की लड़ाई के लिए आज ये मुहिम शुरू की गई है। तो मुहिम का काम जो है वो बेसिकली गांव के औरतों के साथ है, और गांव में भी खास तौर पर मुसहर जाति के साथ है। मुसहर जिसे आमतौर पर रैट ईटर्स, चूहे खाने वाली कम्युनिटी माना जाता है। तो जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहां पे सर्च में हमेशा आपको मुसहर कम्युनिटी आएगी, जो पूरे कम्युनिटी का एक आंकड़ा बताती है, जिसमें महिला, पुरुष और उनकी मूलभूत समस्याएं होती हैं। लेकिन एक मुसहर महिला के क्या संघर्ष हैं, उनकी क्या कंडीशन है, और जब वो डिसेबल होती है तब उनकी कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है जब 10 साल की बच्ची के गोद में जो है 2.5 साल का बच्चा आ जाता है। तो बहुत नॉर्मल है। और ये सारी चीजें आज हमारे प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग और डेवलप सोसाइटी में चल रही हैं। तो मुहिम बस इतनी सी ही है कि इन सारी परतों को खोलना और कैसे रास्ते बनाने हैं, शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, खेल के माध्यम से। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि रास्ते क्या होंगे, चूंकि प्रॉब्लम बड़ी मल्टी लेयर्ड है, हमारी पहचान बड़ी मल्टी लेयर्ड है, तो हमारा प्रयास भी बड़ा मल्टी लेयर्ड होना पड़ेगा। कोई एक रास्ता नहीं है कि ये दवा दे देंगे तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये इलाज नहीं करना है। हम हवा बदलने की बात नहीं करते, हम माहौल बनाने की बात करते हैं। माहौल ऐसा, वो कुछ इस कमरे जैसा हो जहां पर कैलकुलेशन में हम फटाफट जवाब दे सकें। तो क्या इस कमरे में कभी मुमकिन होगा कि एक मुसहर समुदाय की लीडर स्वाति की कुर्सी पर बैठ करके और इतने ही दावे के साथ और ताव के साथ बात कर पाएगी? तो मुहिम बस इतनी ही है। और खास तौर से जब हमने मुहिम की शुरुआत की थी तो 22 साल की उम्र में जब आप BHU JNU जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ करके बाहर निकलते हैं और मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि या तो IAS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, और या तो फिर एक अच्छी बहू बन जाए। तो वैसे ही मेरे भी एक्सपेक्टेशन मेरे घर से भी वैसे ही थी। तो उन बैरियर्स को तोड़ना ये मेरे अपने स्ट्रगल थे। अपने खानदान में डेवलपमेंट सेक्टर में आने वाली, वोकल होने वाली, अपनी चॉइस करने वाली पहली लड़की हम बने, और बहुत विद्रोह रहा। और शुरुआत से जो चरित्र पर सवाल है वो यूनिवर्सिटी पर ही आया था, क्योंकि मुहिम ने अपनी जो पहली मुहिम शुरू की थी वो पीरियड्स के मुद्दे पे की थी, और तब अक्षय कुमार ने पैड नहीं लहराया था। तो जो पीरियड का मुद्दा था उस पर बात करने वाले लोग
पुरुष महान कहे जाते थे, महिला बेशरम कही जाती थी। तो बनारस की पहली बेशरम और कैरेक्टरलेस महिला जो है वो हम थे। तो मीडिया वालों ने हेडलाइन भी ये निकाली थी। तो मुहिम कुछ इस तरीके से शुरू हुई थी। एज अ जर्नलिस्ट हमने अपना करियर शुरू किया, मेरा बैकग्राउंड जर्नलिज्म का रहा है। बड़े लेख लिखे, लगा लेख लिख करके दुनिया बदल देंगे, कुछ नहीं बदला। अवार्ड मिले, फोटो छपी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मेरे घर में भी काली पन्नी में ही पैड आता रहा, और मम्मी का वही होता था कि पीरियड आया तो अच्छा ठीक है आराम कर लो, और भाई या घर में कोई पूछेगा तो कह देंगे तबियत खराब है। तो वो शब्द जबान पे नहीं आए, तो लगा कि कुछ ज्यादा बदलेगा नहीं और मेरी डिग्री धरी की धरी रह जाएगी। तो यही कुछ अपने पर्सनल स्ट्रगल को लाना, पास द माइक, संगठित महिलाएं, न कभी हारी है ना हारेंगी, ये कुछ ऐसे बुनियादी चीजों को लेकर के मुहिम की शुरुआत 2017 में की गई। और जब एक यंग लड़की बिना शादी के कॉलेज के बाद सीधे जमीन पर उतरती है और वो कहती है कि मैं गांव गांव जाके काम करना है, तो बहुत सारी गालियां, बहुत सारे ताने और चरित्र पे बहुत सारे सवालों को लेते हुए मुहिम बस यही कर रही है कि महिलाओं की परतों को खोलना, नेतृत्व की परिभाषा को तय करना, और जिसका नेतृत्व है वो खुद तय करे कि मेरे लिए नेतृत्व क्या है। हम घूंघट में रह करके भी अपने अधिकार की बात बड़े जोर से कर सकते हैं। जरूरत नहीं है कि हमें जींस टॉप पे लाने की क्रांति है। तो अपनी क्रांति, अपने नेतृत्व, अपने आजादी की जो डेफिनेशन है वो हर महिला खुद से डिफाइन कर सके और उसको एक्सरसाइज कर सके, वैसा माहौल बनाने का काम मुहिम फिलहाल कर रही है। तो स्वाति, जब आप बात कर रही थी ना, तो मेरा ख्याल यही आया कि जब मैं कॉलेज में थी तो मुहिम क्यों नहीं था उस समय। तो जो जिस तरह से आप बता रही थी कि आइडेंटिटीज बहुत हैं और इसीलिए संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है, पर अगर कोई हाथ दे दे उस समय तो बहुत आगे तक निकल सकते हैं। So, I always think that if I had Muhim as an ally when I was when I was in college and fighting some of those fights as well, some of them are universal and some, just keep adding on and layering on as well. So thank you for the work that you do. And, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात हम पूरा दिन कर सकते हैं, पूरा हफ्ता कर सकते हैं, महीनों महीनों कर सकते हैं, सालों भर कर सकते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि काम की शुरुआत ही है। चाहे कितने भी साल हम लोग काम कर चुके हैं, काम की शुरुआत है, लेकिन साथ है अब, ये नहीं कि अकेले हैं। एंड आपसे, आपकी जर्नी से सुन के बाकी सब लोग जो यहाँ हैं, I think it's not just to listen, but to reach out to any of us in whichever way we can support you as well. So thank you so much. And again, a big thank you to everyone who's made this book and this work possible. What's the button? Okay. Can I request Susan and Shombi to join us on stage for a group photograph with the ladies? After this, yeah. Can I request Hillary also to join us? Oh, issues.
Ladies on the podium, please be seated. Yeah. Let us now welcome Mr. Shombi Sharp, UN Resident Coordinator, UN in India, to share a few words. Hey. Namaste, everybody. To Ms. Hillary Pennington, Executive Vice President of Programs of Ford Foundation, to my dear colleague Susan Ferguson, Head of UN Women, to our amazing panelists here today, discussants, to all of you who have taken your time to come and celebrate this important occasion with us. I first of all wish you all an up sabko UN House में स्वागत है. Welcome here. आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. I'm very much regret, embarrassed to have been late. Had intended to be here the whole time. Had an important big Bharat Mandapam meeting with the Tribal Affairs Ministry. Minister also on very, very important issues, also very much linked to women's empowerment and gender equality among tribal populations. So very much a continuum to the discussion here today. But I can really feel, even just a few minutes in the room, this powerful Nari Shakti and amazing color, beautiful saris, and really strong emotion in this room. And so I know that it's been an incredible discussion. And I wish to congratulate UN Women and Ford Foundation and all of the strong women featured in the book for the publication of this amazing book. I love to give, I have a few sort of favorite publications that I'm always giving as a gift, memento to the VVIP guests that are coming along. And India being India, we receive many of them. So I do agree with Susan that this would be a wonderful new go-to gift for these heads of states and international organizations who come here frequently. I had so of course I know this is an extended celebration of International Women's Day, which I think is absolutely appropriate, and as we all agree, it's not one day of the year, it's every day of the year. So let me wish you all Antarashtriya Mahila Divas ki Shubhkamnaएं, but each and every day of the year. This is the important point. A few weeks ago, I had the great privilege to moderate a panel at the Rasina Dialogue. I'm sure most are familiar with that, India's sort of premier annual geopolitical sort of Davos-style gathering. So I had the privilege to moderate a panel on women's empowerment and gender equality with some incredibly powerful speakers, including Minister Smriti Irani. And as we were, I was sort of towards the end of the 3 days, and in our discussions with the panelists before, there was a kind of a peeked out into the room, and there weren't so many people there, and so there was this lament of, again, is it the discussions on gender equality is being left, sort of to the end, and not so many people out there and in the audience, and certainly not too many men in the audience. This was sort of the feeling before we started, and we went out on stage, and the first point I made was that this is actually in many respects the most important discussion of the entire 3 days, and I believe on the basis of how much how dynamic the 4 women were on the panel, and the discussion got into such an incredible place. Full of emotion and powerful insights, that the word spread, and literally
by halfway through this panel discussion, the room was packed. And I'm pretty sure 50-50 men and women as well. And afterwards, many people came up and said that was really the most exciting and powerful panel of the entire 3 days. The Racine dialogue is amazing. It's very good. So all the other panels were also very important. But I think it really, really did, in a way, bear out the point that, as the Secretary General says, gender equality is the unfinished business of our time. The one among many, but the one unfinished business of our time that if we solve, when we solve, as we solve, really brings solutions to all of the other problems across the sustainable development goals. And yet, as we know, as UN Women points out, as many organizations point out, we're still at present trends 100 to 300 something years away from gender equality, which is simply unacceptable. And that's the point of the Secretary General. But we know what to do. That's the good news. And we can reverse course. And a lot is happening. And we've been hearing so many amazing stories and reading in the book so many amazing stories. And the best part of my job here in India as resident coordinator is having the opportunity to travel around the country to see the fantastic work, partnerships that UN Women, that our other UN agencies are engaged in, and to meet with communities, to get out of capitals, to get into the states, into the regions, into villages, and really see the incredible work that's happening. And this gives optimism. So we know that, it's these couple simple truths. How do we reach 2030 and then much beyond? Here, India's also focused on 2047, Viksit Bharat. How do we get there? Well, again, investing in gender equality is the most important, the highest return on investment that we have, the greatest multiplier. And there, I think that the message is that, it's for everybody. So gender equality is, of course, first and foremost, a core human rights issue, no doubt about that. But every human being has equal, claim to every possibility to be the full person they want to be, no doubt about that. It is also simply smart economics. So when you don't have half of your population able to contribute to their full abilities, just like if you have an engine with half the pistons firing or something, nobody wins, everybody loses because the system doesn't deliver what it can deliver. And that's for a household, that's for a firm, for a business, and that's certainly for a nation. And in that respect, truly, gender equality and women's empowerment, and why it's so important that we have men in the room, is not just a women's issue. This is the point. It's a societal issue, and it's for men and boys equally. So like any great human rights challenge and battle, it has to be fought. I mean, the ones in the front are the people in the communities most affected. So here, clearly, it's about women leadership, first and foremost, no doubt about that. But it's also about allies and about society coming together. And so men and boys are absolutely vital as part of the overall effort. So I think, let me really just, because I know we've gone a bit over time, so I will conclude there. But just to say that really it's a great honor on behalf, again, of the whole UN system to be your partners in this critically important, crisis response to get to where we need to get in the next 7 years and in the next to 2047 as well. And I just want to thank all of you again, those on stage and here in the room, for your trust in us, your trust in the United Nations. And I want to recommit that we will be your best partners on the path ahead. And not if, but we will achieve gender equality. We will achieve the SDGs. And my favorite sort of phrase, again, it's India is giving us so much optimism now with the change that is happening.
that I like to say SDGs दुनिया में मुमकिन होंगी क्योंकि इंडिया में मुमकिन होंगी. But thanks to you. बहुत धन्यवाद. Thank you, Shombi, for sharing your thoughts. And I'm really inspired the way you compared the need of gender equality with half working engine. I hope it makes it crucial for people to make it work. For the panelists, thank you, Reshma, for moderating, and the fellow women leaders for sharing their stories. Just a few lines from Kunwar Narayan. कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं. Okay. As we near the conclusion, it seems only fitting to express our gratitude to those who made this event possible. May I please request Ms. Krati Sharma, Coordinator, Intergovernmental Processes at UN Women, to share a few words. Thank you everyone. So yes, so I've been tasked to give the vote of thanks. I would like to express my sincere gratitude to all of you who are sitting in the room and joined us for the launch today. We are really humbled by the gathering in the room, and and there are many people who have joined us online because we were live streaming this event. So thank you, everyone. Some of you, like, special thanks to the women leaders who trusted us and shared their stories and brought this book to life. This has been a work of passion that has found its way to being published, and thanks to the team of all women photographers, writers, and designers who brought these books to life. This is a long list of names, and special thanks to our editor, Ms. Urvashi Butalia, who needs no introduction. She was able to bring about the feminist narrative, and we couldn't have had it any other way. Special thanks and the patience that Susan and Khan Baji had with us, and the special shout out to the team behind the scenes at UN Women, and I will take names. Give me a moment. So I'll start with Akansha, Abhishek, our team of young professionals, Amisha, Amrita, and Shreya, Daniel, Kiran, Nilanjana, Pallavi, Sanya. She's not in the room with us today, but yes, she's watching us live. Sneha, Shraddha, Shreya, and Tabitha. Tabitha, thanks for stepping in and saving us. and finally, of course, the team at Ford Foundation. And we've been so grateful for the generosity of time and words from Ms. Reshman and her team, Prarthana, Ayushi, and Alika. Thank you, everyone. Thank you so much, Krati. Heartiest congratulations to our audience for being an integral part of this celebration, to our guests for their invaluable presence, and all the members of the organizing committee for their tireless work. Before we leave this space, a few announcements. Our colleagues Shreya and Sneha will be approaching you for the video bites. We request you to kindly support them. There's a beautiful photo exhibition laid out in the lawn. Please walk through the colors of life spread out in the form of pictures for you. Also, we request all the photographers, writers, editors, and designers who have contributed in the making of this book to join us on the stage for a group photograph. We'll do that separately, yeah. And we'll have a group photograph outside the hall. The stage is too small for that. Yeah. So we have a picture of the women leaders who are in the room but not on stage today. I know there's a bunch of you who are attending. We'll do the group photograph in the lawns because all of you won't fit on the stage. But we'd like the documentation team, all the writers and photographers, to please join us. All the photographers, writers, editors, and designers. The ones who are present.
Thank you, everyone, for being a part of this wonderful celebration. Remember, we are all equal contributors to society and the shapers of our future. We may please proceed for the lunch now. Thank you. At the Neem Lounge.